my channel. I'm Sia. Thank you so much for watching my videos. So in today's video, what are we going to do is we're going to start with a new grammar topic, that is literary devices. And literary devices in Hindi are often called as alankar, and some of these alankars or literary devices are in front of you, that is simile, metaphor, alliteration, personification, etc, etc. Then let's get started with this video. So firstly, the very first literary device that we are going to do is anaphora. Now what is anaphora? Anaphora is a figure of speech in which words repeat at the beginning of successive clause, phrases or sentences. For example, in every cry of every man, in every infant's cry of fear, in every voice, in every bay, in every band. So sorry. So in this example, as you can see, that the word in every is repeating, that is in every word, in every word is coming in every line. So this is called anaphora. जब हमारा कोई एक word, phrase एक ही sentence में, एक से ज़्यादा सेंटेंसेस में बार बार आता है, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा. सो हेयर व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा? इन एवरी वर्ड. Then the second literary device that we are going to do is alliteration. Now I know you all know that what is alliteration. So alliteration is occurrence of same letter at the beginning of the words. जैसे कि हम्बल हाउस, पोटेंशियल, पावर प्ले, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो नाउ अब हमारे एलिट्रेशन कब होता है? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन? जब जैसे कि हम्बल हाउस, पोटेंशियल, पावर प्ले. अब इसके अंदर क्या है? एज यू कैन सी दैट इन हम्बल हाउस एच अल्फ़ाबेट इज कमिंग अगेन एंड अगेन, right? तो ये H alphabet is an example of alliteration. And in the word potential power play, P is coming again and again, which is again an example of alliteration. So this is the meaning of anaphora and alliteration. Hope you all have understood, and if you haven't understood anything, then please comment down below. I'll try to resolve each and every query of yours. And guys, the link of other chapters or other videos of my channel are given in the description, and if you want to check out that, then please go and check out from the description. So the next literary device that we are going to do is enjambment. Now what is enjambment? The continuation of a sentence without a pause, with beyond the end of a line, couplet or stanza. For example, we were running to find what had happened beyond the hills. Now if you all can imagine that this is a single line which has been written in 3 lines. So this is what enjambment is. दिस इज़ ऑल अबाउट इंजैबमेंट. सो अब इंजैबमेंट में क्या होता है? जब हम एक ही लाइन को, एक ही कपलेट को हम अभी फॉर ईजीनेस हम क्या लेंगे? हम लाइन ही बोलेंगे, राइट? जब हम एक लाइन को एक से ज़्यादा बारी में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एज यू कैन सी कि ये एक ही लाइन है, वी वर रनिंग टू फाइंड व्हाट हैड हैपेंड बियॉन्ड द हिल्स. वी नो दैट दिस इज़ अ वन सिंगल लाइन, राइट? बट हियर आई हैव रिटन दिस सिंगल लाइन इन 3 लाइन्स, राइट? मैंने इसको 3 लाइन में लिखा, एक सिंगल सेंटेंस को मैंने 3 लाइनों में लिखा. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंजैबमेंट. जब हमारी एक लाइन ख़त्म नहीं होती और हम उसको दूसरी लाइन से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो दिस इज नोन एज इंजैबमेंट. देन कम्स सिमिली. नाउ सिमिली इज, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू फाइंड a person very brave, then you will tell that person that, oh my god, you were brave as lion as a lion, or you are as brave as lion. मतलब तुम lion की तरह brave हो, right? You are comparing that person with a lion. So अब simile में हम कैसे compare करते हैं? simile में हम सबसे पहले क्या करते हैं? compare करते हैं, right? by using the words like and as, right? For example, you were as brave as a lion, we just discussed this. Then they were fighting like cats and dogs. जैसे कि मतलब वो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, जैसे हमारे cats and dogs लड़ते हैं, वैसे ही वो दोनों भी लड़ रहे थे. So you are comparing, the second example, you are comparing two people with cats and dogs, right? because they were fighting like cats and dogs. Then in first example, you are comparing a person from the lion because he was brave. So here in simile, we compare people from other things or other animals, etc. by using words like and as, right? Then moving ahead, simile and metaphor are interconnected with each other. So please, let's focus. Now what is metaphor? It is a figure of speech that directly refers to one thing by mentioning other. For example, he is a walking encyclopedia, her voice is music.
right? What is the meaning of this metaphor? In Hindi this metaphor is known as रूपक अलंकार. So metaphor के अंदर हमारा क्या होता है, हम किसी चीज़ को उसका रूप दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट सिमिली ओनली. अब मैंने सिमिली के अंदर क्या किया था, यू वर एज ब्रेव एज लॉयन. सिमिली में क्या होता है, हम उसको कंपेयर करते हैं कि भाई तुम इतने ज़्यादा ब्रेव थे कि तुम लॉयन की तरह थे, राइट? यू वर एज ब्रेव एज लॉयन, राइट? ये तो हमने लिखा सिमिली. बट अगर सिमिली में, राइट, अगर हमें इसी सेंटेंस को मेटाफर में लिखना होता तो हम कैसे लिखते, यू आर अ लॉयन. हम उसको ये नहीं बोल रहे कि तुम लॉयन की तरह ब्रेव थे, राइट? हम बोल रहे तुम लॉयन ही थे. क्यों? क्योंकि तुम ब्रेव थे. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड आवर मेटाफर. लाइक अब मैंने सेकेंड एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, जैसे कि दे वर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स. मतलब वो कैट्स और डॉग्स की तरह दो जो लोग हैं वो लड़ रहे थे, राइट? अब अगर मेरे को इसी को मेटाफर में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे, दे वर कैट्स एंड डॉग्स, राइट? हमने उनको कैट्स एंड डॉग्स क्यों बोला? क्यों? क्योंकि दे वर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सिमिली में हम सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करते हैं. बट मेटाफर में व्हाट वी डू इज़ हम उनको उनका रूप ही दे देते हैं, हम उनको वो चीज़ बना ही देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है तो हम ये नहीं बोलेंगे यू आर एज मेलोडियस एज लता मंगेशकर, राइट? अब हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर क्या है, हर वॉइस इज़ म्यूज़िक. अगर किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है आप उसको ये नहीं बोलेंगे अरे तुम्हारी आवाज़ तो लता मंगेशकर जितनी अच्छी है. तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, योर वॉइस इज़ म्यूज़िक. देन इन फर्स्ट एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन इज़ वेरी नॉलेजेबल, हम उसको ये नहीं बोलेंगे यू आर एज, हम उसको सिमिली में कैसे बोलेंगे, यू आर एज नॉलेजेबल एज आइंस्टाइन, राइट? बट अब मेटाफर के अंदर क्या बोलते हैं, यू आर एन आइंस्टाइन. हम उसको आइंस्टाइन ही बोल देते हैं. देन अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, अगेन एक और पर्सन है वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, हम उसको बोलेंगे ही इज़ अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया. मतलब वो इंसाइक्लोपीडिया ही है, उसको सब कुछ पता होता है, राइट? तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर. देन व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन गिवन टू समथिंग नॉन ह्यूमन. फॉर एग्जाम्पल माई अलार्म क्लॉक yells at me to get out of bed every morning. So we know that an alarm clock is a non-living thing, right? Obviously. So an alarm clock being a non-living thing cannot yell at us, right? So therefore in this sentence that my alarm clock yells at me, so in this sentence we are giving human characteristics, that is yelling, to something non-living, that is alarm clock, because we know that alarm clock cannot yell, but still we are saying that my alarm clock yells at me. So in this sentence we are using personification. Moving ahead, Rita heard the last piece of pie calling her name. We know that a non-living thing, that is the pie, cannot call somebody, right? So in this sentence also we are using personification, because a non-human thing, right, because a non-living thing, that is pie, is doing something like a human being. That pie has given a human characteristic, like that pie is calling her name, calling Rita's name. So here personification is used. Moving ahead to what is imagery. Like it is a literary device that refers to the use of figurative language to evoke a sensory experience or create a picture with words for a reader. अब इमेजरी के अंदर क्या होता है, मैं कुछ बोल रही हूँ, राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इट वॉज द डार्क फुल मून नाइट एंड आई वॉज ऑल अलोन इन द फॉरेस्ट. तो जैसे मैंने सेंटेंस बोला, आई होप अ पिक्चर आपके मन में बन गई होगी कि एक आपके मन में क्या पिक्चर बनी होगी, एक पूरा रात है, राइट? मैंने जैसे बोला इट वॉज द डार्क फुल मून लाइट, तो आपके माइंड में क्या हुआ होगा, एक काली घनी रात की पिक्चर बन गई होगी. और फिर मैंने बोला आई वॉज ऑल अलोन इन द फॉरेस्ट, फिर आपने किसी बंदे को इमेजिन कर लिया होगा कि वो फॉरेस्ट में खड़ा हुआ है, राइट? सो अब जो जैसे जैसे मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, जैसे जैसे मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, वैसे वैसे आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होती जा रही है. सो हेयर वी आर यूजिंग अ लिटरेरी डिवाइस कॉल्ड एज इमेजरी. जब मैं सेंटेंस बोल रही हूँ और उसी के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो उसके, आप क्या कर पा रहे हो, अपने माइंड में उसकी इमेज बना पा रहे हो. यू आर एबल टू क्रिएट एन इमेज ऑफ दैट थिंग इन योर माइंड. देन द नेक्स्ट कम्स repetition. Now what is repetition? It is simply repeating of a word. अगर हमारा कोई एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है एक सेंटेंस के अंदर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिपीटिशन है. फॉर एग्जाम्पल नोरी वॉज अ कैथोलिक बिकॉज हर मदर वॉज अ कैथोलिक, एंड नोरीज मदर वॉज अ कैथोलिक बिकॉज हर फादर वॉज अ कैथोलिक, एंड हर फादर वॉज अ कैथोलिक बिकॉज हिज मदर वॉज अ कैथोलिक और हैड बीन. सो इन दिस सेंटेंस यू कैन नोटिस दैट कैथोलिक वर्ड इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. सो देयरफॉर दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ repetition. Moving ahead to the last two literary devices, that is,
So our next literary device is onomatopoeia. It is called onomatopoeia. Now what is this? It is a figure of speech in which words evoke the actual sound of the thing they refer to or describe. For example, the boom of a firework exploding, the tick tock of a clock and the ding dong of a doorbell. So अब onomatopoeia के अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, साउंड्स को बोलते हैं, राइट. onomatopoeia के अंदर क्या होता है, हमारे साउंड्स वर्ड्स आते हैं, मतलब साउंड वाले वर्ड्स जो साउंड डिस्क्राइब करते हैं. जैसे बूम, बूम किसका होता है, फायरवर्क एक्सप्लोडिंग का होता है, या फिर अगर किसी की टक्कर हो जाए कार के साथ तो बूम. तो ऐसा बूम क्या है, एक साउंड का वर्ड है, राइट. रसलिंग लीव्स, तो इसके अंदर रसलिंग क्या है, हमारा साउंड का वर्ड है. जैसे कि डिंग डोंग ऑफ डोर बेल, सो हेयर डिंग डोंग इज साउंड वर्ड. टिक टॉक ऑफ क्लॉक, देन हेयर टिक टॉक इज अ साउंड वर्ड, राइट. इसके अंदर क्या होता है, साउंड आ रही है. सो दिस इज वॉट ओनोमेटोपिया इज, जिसके अंदर साउंड आ जाए, राइट. Then our next literary device is hyperbole. Hyperbole के अंदर क्या होता है, exaggerated statement. हम कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं. हिंदी in simple language, in देसी language, it's just कि हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं. For example, he is running faster than the wind. We know that a person cannot run faster than a wind, right? But still we are saying that he's running faster than the wind. So here we are exaggerating his speed, right? Then your skin is softer than silk. A human skin cannot be softer than silk यार. Please understand, किसी की जो skin है वो silk से ज़्यादा soft कैसे हो सकते. तो here we are exaggerating their skin. So that's all for this video, and if you haven't understood anything, then please comment down below. I'll try to resolve each and every query of yours. And guys, please subscribe to my channel. It's absolutely free. कितना ही टाइम जाएगा आपका सब्सक्राइब करने में यार. According to my stats यार 90% people come and don't subscribe. क्यों भाई, मुफ्त में शो क्यों देख रहे हो तुम लोग. प्लीज़ सब्सक्राइब यार, कितना ही टाइम जाता है. And guys, please like this video if you found it helpful, which I know you did. And please stay tuned until my next video. And for now, bye.